This is Nishant, and I'm starting this. I don't know, like challenge, not a challenge, but okay, it's a challenge to for like next 100 days for 3 months. I'm going to upload and give a review of any literary piece, whether that's an short story or a essay or an article that I liked or article that's very famous or is by preferred. I don't know. Maybe preferred won't be the right word, but recommended by other I don't know literary personalities. So today I'm going to start with this short story that I read. It's called Novel in Nine Letters, and it's by the famous and the great Fyodor Dostoevsky. So Dostoevsky wrote it before he went to the exile of 10 years when he was arrested and was almost was almost killed, and then he served around 6 years in a prisoner camp. So he wrote it before that, and I think it's 1948 or 47 or 46. Like it's written among these years. So basically, it's a story about this these two characters, these two business partners, and they write letters to each other. वो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं एंड द मेन ट्रस्ट इज के उनकी कोई डील हुई है तो हमें पता नहीं है लाइक स्टोरी जब स्टार्ट होती है उससे पहले डील हो चुकी है और वो एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं एंड एज द टाइटल सजेस्ट 9 लेटर्स भेजते हैं उसके अंदर पूरी कहानी बताई है डोस्टोयेव्स्की ने सो तो जो दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं उसमें से एक इज लाइक वेरी पैरानोइड वो सोचता है कि जो दूसरा बंदा है कहीं वो मेरे लाइक ही इज नॉट चीटिंग मी वो पैसे लेके भाग नहीं रहा वो क्योंकि क्या होता है दे they wanted to meet each other. They know each other from early, but they're not able to meet each other. मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है और उन्हें कहीं जाना पड़ता है. For like very much the tone of comedy of errors कि something happens and दोनों के बीच में misunderstanding हो जाती है जिससे bitterness just it the relationship of them take a bitter turn. So in the start, we have this character Piotr Ivanich, and this is a person I think very gullible, not very gullible, but he's normal, and he just thinks कि वो सोचता है कि like why isn't Ivan Petrovich is not uh, trusting me. And the second character, Ivan Petrovich, is like a very paranoid person, skeptic person. वो हमेशा सोचता है कि कहीं ये मेरे पैसे लेके ना चला जाए. And he is the person who speaks the bitter truth. He just puts his thought on the paper कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे से इसलिए नहीं मिलना चाह रहे कि तुम मेरा जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो तुम बस लेके फरार ना हो जाओ एंड ऑल दैट सो उनके बीच में बातें होती हैं नो लेटर्स एक दूसरे को सेंड करते कलेक्टिवली एंड इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि रीजन क्या है कि वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे सो क्या होता है कि प्योर इवैन के घर पे जाता है तो इवैन नहीं मिलता है इवैन कहीं और होता है जब इवैन प्योर से मिलने आता है सो प्योर को कहीं जाना पड़ता है एंड थिंग्स लाइक दैट सो these are it's very entertaining in a manner के दोनों के बीच में छोटी छोटी बात होके इतनी बड़ी बात हो जाती है कि वे बोलते हैं कि तुम मेरे घर पे मत आयो और प्योत्र बोलता है इवान कहता है हाँ हाँ मुझे भी तेरे घर पे आने का कोई शौक नहीं है सो द कॉन्फ्लिक्ट ग्रोज सो मच दैट it it just breaks their relationship the partnership that they had and their friendship too
So it's a very entertaining short story. I urge all of you to read it.